The concept of external linking is clear. Any doubt in the external linking to anyone? The meaning of linking and the types of linking we have done yesterday. So, the meaning of external linking, who will tell me? What is the concept of external linking? Any one of you? Yes, Jasleen? External linking is a linking in which we link different web pages. Yes, so external linking is a type of linking in which you connect two different web pages. You create a link in one web page and you just jump onto the another web page where you are having the related information. For example, a website is a collection of web pages, and website, under the website, if you are saying the collection of web pages means those web pages will be linked with the help of the hyperlinks. And how do we create a hyperlink? With the help of which tag? कौन सा टैग यूज होता है हाइपरलिंक के लिए? Yes, that is A tag. A stands for anchor. Anchor is a container tag, right? And the attributes of anchor tag are name, href, title. There is one more attribute target, so we will be discussing it today. That is name, hyperlink reference, that is href, and then the title, where you will be giving the tooltip text. When you will scroll the mouse over the link, you will get the title. You will get one description, the text that you have set inside the title attribute. Okay, so this we studied related to external linking yesterday. So today we are going to start with internal linking and the email linking. Internal linking, bache, I already told you, when you want to move to the sections but within a single page, you will not connect different web pages. The different web pages will be connected with the help of the external linking. But in case of the internal linking, you will just move or jump to the sections but within a single web page. Means one web page will be there. In a single web page, different sections will be there. So you need not to scroll your web page. आपको वेब पेज को स्क्रॉल करके अप डाउन नहीं जाना है. You will simply click on one section and that particular section will get open. For example, in Wikipedias, you might have seen in the Wikipedias what happened is आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करते हो और आप जंप कर जाते हो एक पर्टिकुलर रिलेटेड सेक्शन के ऊपर. So that is internal link. And email linking, that we will achieve with the help of the mail to function to be used inside the A tag, in which email linking will be performed. You will click on the email link by just giving the email address. Once upon clicking on the email address, it will open the email window where you are able to send the email to a particular email address. But make sure POP settings has been done properly. That is post office protocol, which is used for sending the emails. POP is a protocol which is used for sending the emails. Okay, so this settings is to be done on the systems that I will tell you later on. So let's do it practically now. These are the three types of linking: external, internal, and email linking. Inside the email linking, we have to use the function mail to. Mail to is a function. Okay, this is a keyword, or you can say it is a keyword. Right? Now, what is the syntax of external linking? I'm just giving you the brief idea. When you have to achieve external linking, you will just specify a href, that is hyperlink reference, then URL of web page, right? After that, you have to specify the name of web page on which you want to click, and then a tag close. So this is external linking. Now, bache, when you have to do the internal linking, so I am saying you need not to connect different web pages. आपको वेब पेजेस को वहां पे कनेक्ट नहीं करना. आपने एक ही वेब पेज पे रहना है. सिंगल वेब पेज के ऊपर यू आर जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन सेक्शन टू दी अनदर. सो दैट मीन्स कि आपके पास यूआरएल कोई भी नहीं होगा. यूआरएल नहीं होगा तभी तो वो एक पेज पे रहेगा. अगर आप
URL ही लगा दोगे मीन्स आप किसी और पेज का URL दे रहे हो, आप किसी और पेज का एड्रेस दे रहे हो, बट हमें तो वेब पेज को कनेक्ट ही नहीं करना, वी हैव टू बी ऑन द सिंगल वेब पेज, सो नो URL will be there. But for achieving the linking, we have to use href attribute, that is hyperlink reference. So what we will do in href, हम क्या specify करेंगे? So let's see. In case of internal linking, now I'm going to write the coding for the internal linking. So note it down side by side. Ahref equal to hash. The symbol hash will be used here. Ahref equal to hash and then one keyword. You will specify the keyword here. Then name of the link and then a tag close. But along with this ahref, we have to use name attribute also. Name attribute specifically to be used in internal linking only. ahref equal to hash keyword. Keyword यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एक name define करोगे, but it should be related to the topic, right? The same keyword is to be used as a value inside the name attribute. This thing is clear to everyone? What I have said, बच्चे, जो चीज भी आप जिसको भी आप एक कीवर्ड बनाओगे ना, कीवर्ड is to be made by ourselves own according to the work you are going to do. Whatever the text you are revealing in the web page, it should be related one. But make sure while doing the internal linking, whatever the keyword or the text you are going to set inside the href attribute using a hash symbol, the same text is to be written inside the name attribute. href की जो वैल्यू आप सेट कर रहे हो वही सेम वैल्यू आपकी नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी रहेगी. That is a name equal to keyword. So this is the syntax of internal linking. Any doubt? Any doubt to anyone? Internal linking के syntax में? Should I move forward then? Is it clear? Yes? Okay. Now, a syntax of email linking. How to achieve email linking now? I will give example, Amrita, just let me finish the syntax first and then we will be doing the complete one web page, including all the links. Okay? Yesterday we did external linking, तो आज मैं आपको internal linking plus email linking इकट्ठा करके बताऊंगी, but उसके पहले आपको syntax पता होने जरूरी है. So just have a look on the syntax. The syntax for email linking ahref equal to, now here you have to use a function mail to then colon symbol, mail to colon symbol. Okay, this thing is clear. Now here after the colon symbol you have to type email address, then double quotes close, then the text or name of the link that you want to click, and then a tag close. Right? This thing is clear, bache? Now let's do one example. ahref equal to www dot. So this is the link I have created. So this is the external link. Let it be click here. So this is a internal link. Now for making the internal link ahref, for example, let it be, I am taking the example of devices here. तो यहाँ पे हम एक heading बना लेते हैं using a p tag, devices, then p tag close. Right? Now see, ahref equal to hash input. ये मैंने input अपनी तरफ से keyword define किया है because I have to substitute input devices here, and here I am writing input devices, the link that I want to form, and then a tag close. Right? Same way, the
सेकंड इंटरनल लिंक, बिकॉज इंटरनल लिंक तभी आपकी अचीव होगी अगर आपके पास बहुत ज्यादा लेंथी वेब पेज है, आपकी स्क्रॉल बार अपीयर हो और आपको स्क्रॉल नहीं करना है, you just have to jump to a particular section, so the length of the page should be there. So Ahref, now it would be output, and here I want to give output devices, right? The same way, third link I am going to make regarding the storage. So the keyword here is storage. और यहाँ पे हम दे रहे हैं storage devices. So let it be the links are in the paragraph form. And here the p tag is to be closed. Yes बच्चे, any doubt to anyone? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब ये तो अभी सिर्फ लिंक्स क्रिएट हुए, अब सेक्शंस कैसे बनेंगे? So let's work on the sections now. A name. Now the attribute to be used is name. A name equal to, now same keyword, क्या keyword था पहला मेरा? Input, right? और यहाँ पे अंदर हम हेडिंग दे रहे हैं input devices A tag close. And here I'm going to start the P tag. Under the P tag, let it be order list. And then li. Now all the input devices I will write mouse, just to make the length I'm just taking the text here. I'm not setting the formatting here, right? मैं इसकी structuring नहीं कर रही हूँ अभी, because we have to finish the topic also. Mouse, keyboard, trackball, joystick, scanner, OCR, MICR, OMR. Now here the OL will be closed. So this makes one complete section of the input. So यहाँ से मैंने start किया, यहाँ पे मेरा P tag close हो रहा है. So this is the input devices section. Now same way I have to make that if I am including HR here. Now same coding you can see. Now the keyword will be output. Yes बच्चे, one thing more you have to see, अगर यहाँ पे मैंने lower case में keyword दिया है तो यहाँ पे भी the same case is to be followed. अगर आप upper case और lower case दे दोगे तो that will be the different keywords, फिर वो matching नहीं होगी. Matching नहीं होगी तो section पे jump नहीं करेगा फिर. Because for moving to the particular section, to jump onto a section to make the internal link, the keywords should be named either in upper case or either in lower case. That is case sensitive. Okay. So now here we have to make output devices, monitor, printer, projector, plotter, speaker. So again another OL list completed here. Now the third one for the storage devices. Now let's look what we have done in the keyword, that is storage. And here the name will be storage devices. So in this DVD, CD, hard disk, memory card, pen drive. अब मुझे बताओ, any doubt to anyone this in this coding? You can look again from here. In this, I have simply made the external link. There I have given the address of a website.
Secondly, from here, we have started the internal linking where I have created 3 links, input, output, storage with the hashtag, and same link is to be followed for making the section with the attribute name. The same keyword is to be followed inside this, and the content will also goes where you will be specifying the name attribute. You can also do it like this. अभी इसमें क्या होगा कि पहले लिंक्स आएंगे, लिंक को क्लिक करके आप सेक्शन के ऊपर जाओगे. आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो कि आपका सेक्शन ऊपर आ रहा है लेकिन लिंक नीचे आ रहे हैं. पूरा का पूरा वेब पेज आ रहा है, नीचे जाके लिंक्स आ रहे हैं. आपको ऊपर जाने के लिए यू कैन जंप ऑन टू अ पर्टिकुलर लिंक. सो यू कैन डू बोथ वेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेब पेज. So this is the internal linking I have done. Now is the case of email linking. So with the example, ahref equal to mail to colon. Now we have to give the email address. For example, I am giving the email address rahul@gmail.com, right? Then contact me, then a tab, close. This is email linking. ahref equal to mail to के अंदर आप email address specify करोगे, then the text on which the hyperlink is to be created, and then the a tab, close. So let's close this document now. Yes, any doubt? Yes, बच्चे, to anyone? So now you can see, ये ऊपर मैंने syntax बताए थे आपको, right? So this is click here. Click here में क्या था? Look at the coding. This thing means external linking, right? क्लिक हियर कर रहे हैं, मैंने वहां पे फेसबुक का एड्रेस दिया हुआ था, तो फेसबुक इज गेटिंग ओपनिंग, राइट? देन द नेक्स्ट इज, now look at the page again. Now comes the internal linking section. आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा बच्चे? ओके, जस्ट a second. Now see, अभी आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है? The output is visible. Okay, so I was talking about this link, click here. Click here कौन सा लिंक है जहां पे हमने एक्सटर्नल लिंकिंग अचीव करी हुई है, and I have mentioned the address ahref https facebook.com, right? This is the address I have given here. So when I will click on this, so Facebook का मैंने एड्रेस दिया हुआ था, तो Facebook ओपन हो रही है, right? Now the next, so this is the web page we are doing. Now when you will click on the internal linking links, so you can see input device, output device, storage devices. So let's do one modification here where we have done the links. So now I'm using a BR to move on to the, आप इसको लिस्ट के फॉर्म में भी डाल सकते हो, BR करके अलग भी कर सकते हो, if you do not want to make it as a bulleted. So now see, the links are available. So अभी तो ये देखो एक ही पेज पे सारा कुछ आपको दिख रहा है. The text is appearing on a single page. तो अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूं, मैं सेम चीज को भी थोड़ा रेपिटेटिव कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सेक्शन में जंप कैसे हो. The same thing I am going to copy. And similarly for the storage devices also. Now you can see. Now I will click on input device. The input device section will get open. I will click on output devices link. The output device section will get open. You need not to scroll. मैंने mouse के साथ scroll नहीं किया. I just clicked on the link and the particular section is open. Clear है? We are not moving to any different web page. हम same web page के ऊपर ही हैं.
Then I will click on storage now. The storage devices will get open. Now at last you can see a new link, that is contact me. Contact me कैसे बना है? From this coding. Ahref mail to contact me, A tag close. Right? So email linking is there. So when I will click on this, so it will ask me to open the mail app. So that is the further steps for sending the mail कि आपने किस तरह से अपनी mail send करनी है using the mail app, using the Outlook Express. So you can use any. Clear? The concept of email linking and internal linking. The concept is clear, बच्चे? Any doubt for anyone? Once again, you can see when I will click on the contact me link. So this mail window is getting opening, right? मैंने वहां पे एड्रेस क्या डाला था? 2 में मैंने यही ईमेल एड्रेस सेट किया था rahul@gmail.com. तो 2 में ऑटोमेटिकली वो एड्रेस आ रहा है. अगर आपकी ईमेल वहां पे लॉगिन हुई होगी, जैसे भी राइट नाउ द ईमेल इज लॉगिन हियर, बाय डिफॉल्ट मेरा एक अकाउंट ओपन था तो मेरा फ्रॉम में आ रहा है. The person who will send the email, to whom we have to send, that will be in the to. क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस जो दिया है वो हमने बोला है मेल टू फील्ड सेट करना है where we have to specify the email address of the person to whom we have to send the email, and automatically when the server settings has been done, so it will show you the mail settings, and directly you just have to type the subject and the same way you used to send the emails, so it will be set. Clear? This thing is clear, बच्चे? Now any doubt to anyone? एक और एग्जांपल करवा दूं, or is it clear? Okay, once again I am going to show you one internal, so I will send you this also. ध्यान से इसमें देखना मैंने क्या किया हुआ है. The same example I have shown you of input, output and storage devices. Now the another example I have created of software. So different types of softwares I have mentioned. So this thing, the structure is clear. I have just given the title. Then body BG color. Background color is set. Text color. And then the link color is set. Right? Font size equal to 6. Space equal to Bookman old. Then font color दिया हुआ है, heading लगाई हुई है computer software. So this is one block on which I have applied heading tag, align center and font color I have given. After this in P tag I have given the meaning of software, that what are computer softwares, right? Then the types of softwares I have described in the list. Yes, you can use color names or color codes according to your choice. Then in the list form, I have given the types of softwares. Now what you see, I have created the internal links. 3 links, the same way I have created for input, output and storage devices. Here I have created the links with the types of software, system software, application software and customized softwares. Then I have given one HR along with the color and the size. Now look carefully. Ahref system software is a keyword in capital. So the same capital I am using in A name. A name system software. Clear? Then here you have to give the content. So in the P tag, I have already given the content for the system software inside the P tag. Then to differentiate, one HR is there. Then second keyword, application software. Second keyword is application software, where the content of the application software will go. So here the link has been created and inside the P tag, I have given the application software content. Clear? After that, again HR, A name equal to customized software. This is the third internal linking. Third type of link in the same web page. So here the customized softwares and at last font tag will be closed. ये कौन सा font tag close हुआ है? This font tag. Because I have set the entire page size as 6 and face as Bookman old. Now बच्चे you might remember ये PT1 के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन था आपको.
जहां पे आपको पूरे के पूरे एंटायर वेब पेज का साइज और फेस सेट करना था, रिमेंबर। और यही मिस्टेक मैंने आपको डिस्कशन के टाइम पे भी बताई थी कि आप फॉन्ट साइज एंड फेस आपने ग्लोबली नहीं सेट किया, तो हाउ टू सेट इट ग्लोबली। हेडिंग के लिए कलर डिफरेंट आ रहा है, इसीलिए मैंने हेडिंग पे अलग से फॉन्ट कलर लगाया है, बाहर एक और फॉन्ट लगाया है जो पूरे के पूरे वेब पेज के लिए चलेगा, और इसका फॉन्ट मैंने लास्ट में जाके क्लोज किया है यहाँ पे above body tab. Clear? Any doubt in this web page, in this coding? This web page is clear? No internal linking बनेगी ही name attribute के साथ. Now let me show you the output of this. So this was the web page I was showing you, where the heading was, for a heading there was a different color, and then the meaning of the software. Then in the ordered list, I have created the types of software here. Now these are the three links: system, application, and customize. These are the hyperlinks to be linked to a particular section in the web page. ये नीचे देखो सारे sections बने हुए हैं. So when I will click on the system software, see the system software section is appearing. Now clicking on the application software, by default link का कलर ब्लू आ रहा है. विजिट होने के बाद ये आपको थोड़ा सा कलर चेंज दिख रहा है क्योंकि मैंने वहां पे कलर सेट किया हुआ है. एक्टिव लिंक रेड ही दिखाई दे रहा है क्योंकि एक्टिव लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर रेड ही होते हैं. व्हेन आई विल क्लिक ऑन एप्लीकेशन, लुक केयरफुली, आपको यहाँ पे कलर दिख जाएगा. सो सी ये मेरे क्लिक स्टेट में है. So this is active link. Now when it's clicked, so this is the section of the application software. At last, customized software. ये लास्ट में आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का सेक्शन अपीयर हो रहा है, बट दिस इज ऑन द सिंगल वेब पेज, सो दिस इज द इंटरनल लिंकिंग. क्लियर है? नाउ वन मोर कोडिंग. In this web page, I have given the description of the anchor tag. So you have to study the description of the anchor tag from here. I will send you. You can practice it out practically also, plus theoretically you can take the notes from this web page. Okay. So here nothing I have done, just set the body BG color, text color, link color, visited link color. Then same thing, font size, font face, then heading का कलर मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पीछे वाले पेज में क्या था, ऊपर लिंक बने हुए थे, लिंक को क्लिक करके वो नीचे सेक्शन के ऊपर जंप कर रहा था. Now the section is created upward, the link is the at the bottom. लिंक को मैंने नीचे कर दिया. पहले वाले वेब पेजेस में दोनों में क्या था कि लिंक ऊपर था, क्लिक करके नीचे जा रहे हैं. अब नीचे मैंने लिंक क्रिएट किया है, नीचे से हमने वापस ऊपर कैसे आना है. सो दिस इज द रिवर्स सेक्शन. ओके. सो हियर जस्ट आई हैव गिवन द हेडिंग मूविंग टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो जब भी आपने टॉप पे जाना है बच्चे, तो आपको सेम ahref और वो चीजें तो चलो नेम वगैरह तो करना है. What you can do is, we are having one keyword that is top, top, inbuilt keyword. आपको a name लगाने की जरूरत नहीं है जब भी आपको टॉप पे जाना है. That can also be done. आप नेम और href के साथ भी वैसा भी कर सकते हो, but there is one shortcut way also when you have to move to the top of the document. So you can see मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ में सारा सेट किया हुआ है और नीचे जाके मैंने यहाँ पे कोडिंग लगाई है ahref equal to #top. This is the inbuilt keyword for the HTML जो आपको डायरेक्टली टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा. और ऊपर देखो मैंने कहीं पे भी a नेम नहीं सेट किया. You can do by that method also. अगर आपने टॉप नहीं लगाना, आप नेम और href के साथ भी उस चीज को अचीव कर सकते हो. The alternative way is you can directly write ahref equal to top. अब इसमें simply look here what I have written for the a tag. A tag defines the hyperlink which is used to link from one web page to another. Attribute of a element is href, which indicates the link's destination. By default, unvisited link is underlined in blue color, visited link is underlined in purple, active link is underlined in red. Now for the href,
href attribute is used to define the address of the file to be linked. In other words, you can say it is the destination page. Here is the syntax. This way you define the syntax. Then example, how to achieve the linkings. Then बच्चे, I have mentioned one more attribute, that is target. टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है वेट टैग के अंदर? अब हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स डिस्कस करे हैं? href, नेम, टाइटल. द फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ a tag is target. Target attribute will tell you where you want to open this page. आप क्लिक करें, वही सेम डॉक्यूमेंट में सेम टैब के ऊपर आपका न्यू पेज ओपन हो, या it will open in new window. So these things you can set that where you want to open the page. This thing can be set with the help of target attribute. So target attribute will use with the href attribute. If you will not use the target attribute, the link will open in the same page. मैं बार बार बैक कर रही थी ना आउटपुट में. क्यों बैक कर रही थी? क्योंकि मैंने टारगेट एट्रीब्यूट नहीं लगाया हुआ. तो उससे क्या हो रहा है? वो सेम पेज पे ओपन हो जा रहा है. अगर आप चाहते हो कि वो टैब भी ओपन रहे, लिंक क्लिक करके न्यू वेब पेज आपको ओपन हो, न्यू विंडो में, न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए आपने टारगेट की वैल्यू सेट करनी है अंडरस्कोर ब्लैंक. अंडरस्कोर ब्लैंक. लेट मी शो यू द वैल्यूज हियर. टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक. By using this target attribute and the value as blank, the web page will open in the new window or in the new tab. Okay, so this is the comment. Remember in the PT1 we discussed how to enable the comments. ये मैंने comment बनाया क्योंकि यहाँ पे tags लगाए हुए हैं, मैंने example दी हुई है. अगर मैं इसको comment ना करती तो ये coding भी वहाँ पे execute हो जानी थी, and already यहाँ पे HTML tag पहले खुला हुआ है. So to avoid that confusion, I have put entire coding inside the comments. So this is the opening comment. This is here I am going to close the comment. Clear? तो आपने ये example आप इसको as it is copy paste करके इसको भी run कर सकते हो. अब syntax क्या है? A target equal to underscore blank, underscore cell, underscore parent, underscore top or frame name. These are the values of the target attribute. So inside the pre tag I have given the value and description of each of the attribute here. Blank से क्या होगा? New window या new tab में open होगा. Self करोगे तो उसी same window में open हो जाएगा. Parent में करोगे तो again new window में open होगा. Top पे करोगे तो पूरी की पूरी window खुलेगी लेकिन top के ऊपर. Frame name ये different frames होते हैं. Table जैसे table के हम एक different sections create कर लेते हैं कि हमने किस site पे अपने web page को open करना है. So this is not in your syllabus, but you just have to learn the value. Then here I have used ahref equal to hash top, then a tag close, and here ahref mail to लगाया मैंने यहाँ पे drop your query. Last example पे I have added the text. Contact me. जो भी आप यहाँ पे text लिखोगे कि that thing will be linked. Okay. Now let's look at the output for the same. The output, this is the anchor web page. ठीक है, ये आपकी सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है. अब यहाँ पे लिंक क्रिएट हो रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये पूरा वेब पेज है. अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो सी आई विल the section will be visible, that is from the top. स्टार्टिंग से आपको वेब पेज आपको दिखाई दे जाएगा. बट मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास इनबिल्ट कीवर्ड है टॉप. बट यू कैन यूज दैट वे ऑल्सो. आप नेम और href के साथ भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एंड एट लास्ट द ईमेल लिंकिंग, ड्रॉप योर क्वेरी. सो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस, again that mail window will open. Now I have mentioned the address ssgps_jal. हमारे स्कूल की वेबसाइट मैंने यहाँ पे email address mention किया हुआ था. So that's why it is in the to field. Clear? From field जो भी आपका अकाउंट ओपन होगा उस टाइम पे, and the same way you have to frame the emails. Now any doubt? Yes, I will send this coding in the group also. So we have finished with the linking topic. What are links? What is a tag? The attributes of a tag.
Three types of linkings are there: external, internal, and email linking. How to achieve that practically? So this I have covered today. Okay, बच्चे, the concepts are clear. I will send you, do it practically. एक बारी सारी कोडिंग खुद स्टडी करो, उसको practically run करो, you will come to know. And test, my dear, it will be on Friday because your test day is on Friday. Yesterday I told na the test will be on Thursday. It will be on Friday. Okay. Rest of the instructions regarding the test I will put in the group. So the time is up. Take care. Have a nice day.